Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How do you feel today? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is in English for grade 5. My dear students, we are going to start our new unit number 11, and its title is Pari Mahal. Okay, my dear students. So, my dear teacher, this is lesson plan and I have divided this unit according to these lectures. Okay. So, our lecture number 1 will be use of question words. We will learn about the use of question word on page number 91. So, its SLO will be recognize the function of different question words. And our lecture number 2, my dear students, we will learn about simile and analogies on page number 92, and its SLO will be analyze and use analogies and more similes in speech and writing using like and as. Lecture 3, we will learn about the long and short vowel sounds and about diphthongs. Okay, on page number 90, and its SLO will be pronounce and spell long and short vowels and diphthongs. In lecture 4, we will learn about will and shall in contraction, and its SLO will be pronounce the weak forms of will, shall and not in contraction. My dear students and my dear teachers, in lecture number 5, we will learn about intonation, that how we have to rise and fall our pitch of sound, and its SLO will be listen and respond appropriately to the sentences with rising and falling intonation patterns. And lecture number 6, we will learn about rhythm, stress and intonation in our reading. And its SLO will be produced in speech and practice appropriate patterns of rhythm, stress and intonation of English language by listening to stories and poems read aloud in class. So, my dear teachers and my dear students, our lecture number 7 will be for comprehension. We will learn about comprehension skills, and its SLO will be apply strategies to comprehend questions for appropriate response by marking keywords, use verbs and tenses in a variety of the following question types: factual, interpretive, inferential, and personal response and open-ended questions. My dear students, our lecture number 8 will be, we will learn about the use of dictionary. Its SLO will be recognize alphabetical arrangement of words in a glossary or a dictionary, locate an entry word in a glossary of a dictionary. My dear students, our lecture number 9 will be about the listening and speaking. We will cover page number 94 about non-verbal communication, and its SLO will be practice and use appropriate tone and non-verbal cues of different communicative functions. And lecture number 10, again in oral communication skill under the title of listening and speaking, we will learn about how we can make polite requests, and its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in a group to make polite requests for personal reasons. My dear teachers and my dear students, our lecture number 11 will be about reading report cards. We will learn about how we can read a report card, and SLO will be locate specific information in a calendar and a class timetable and a report card. In lecture number 12, we will learn about paragraph writing using anecdote. Okay, my dear students, and this SLO will be write a short passage, anecdote, fable, etc. for pleasure and creativity. So, my dear students, our last lecture will be lecture number 13 about story writing. We will learn how we can write a story, and its SLO will be identify the elements of a story, plot, beginning, middle and end of a story with conflict and resolution, human, animal, imaginary characters and their roles, setting. Write a guided story using the elements of story writing. So, my dear students and my dear teachers, in this way we will cover up this complete unit according to 13 lectures will be. Okay, my dear students. So, today we are going to start open book page number 87. Okay, we are going to start our unit number 11, Pari Mahal. ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे परी महल। एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत महल है, कहाँ पे? आज़ाद कश्मीर में। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट
ओपन पेज नंबर 88, फर्स्ट पैराग्राफ से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, परी महल इज अ ब्यूटीफुल गार्डन लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। परी महल एक खूबसूरत बाग है जो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में वाक़ है। It is located at the top of the mountain range, Zabarwa. It is well known for its natural beauty, peace and calm. एक बहुत ही खूबसूरत जगह है प्यारे बच्चों। ये कहाँ वाक़ है? ये टॉप ऑफ द माउंटेन रेंज। उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? ज़बरवा। और उससे ये क्यों जाना जाता है? इस नेचुरल ब्यूटी, इसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से, पीस, लेकिन पुरस्कून माहौल है वहाँ, एंड काम, बहुत ही ज़्यादा अमन सुकून की जगह है ये। ओके, इसलिए ये मशहूर है। द ग्रैंडसन ऑफ एम्परर जहांगीर, प्रिंस दारा शेखू, बिल्ट दिस गार्डन इन द 1600s। ओके, इसे किसने तामीर किया? शहनशाह जहांगीर के पोते ने, प्रिंस दारा शेखू, उसका नाम क्या था? प्रिंस दारा शेखू। उसने इसे कब तामीर किया? 1600 में। ओके, इट वॉज वेल नोन दैट ही बिल्ट परी महल फॉर हिज सूफी ट्यूटर मुल्ला शाह बदख्शी। ये सुनने में आता है कि उसने ये परी महल किसके लिए तामीर करवाया था? अपने एक सूफी उस्ताद के लिए। क्या था उसका नाम? यस, उनका नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। प्रिंस दारा लव्ड टू विजिट कश्मीर। प्रिंस दारा को कश्मीर का विजिट करना, सैर करना पसंद था। He would often invite learned men to have discussion for gaining knowledge. वो अक्सर वहाँ लोगों को बुला लेता था कि यहाँ हम क्या करें, अपना नॉलेज, इल्म बांटने के लिए, हासिल करने के लिए वो क्या होते थे? जमा होते थे। He spent time at the garden through his lifetime in the years 1640, 1645 and 1654. प्रिंस दारा ने वहाँ अपना 3 बार अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारा, एक 1640 में, एक 1645 में और एक 1654 में। द आर्किटेक्चर ऑफ परी महल इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। देयर आर 7 टेरेसेस इन द गार्डन एंड एनीवन कैन गेट। ओके, जो उसकी आर्किटेक्चर है परी महल का, वो किस वे में बना हुआ है? वो बहुत खूबसूरत और इस्लामिक वे में बना हुआ है। ओके, इस्लामी तर्ज अमल का बना हुआ है। उसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो इस्लामी तर्ज अमल की है। और उसके कितने टेरेसेस हैं? 7 टोटल टेरेसेस हैं बेटा। और कोई एक टेरेस में एंटर हो सकता है। एंड एनीवन कैन गेट टू द टेरेसेस थ्रू द सेट ऑफ steps of their corners. One can enter the garden from the 4th terrace where there are a series of entrance building. There is also a small spring surrounding by beautiful flowers that have been planted and well groomed in the terraces. Got it? वो terraces में कैसे हम जा सकते हैं? वो कहते हैं चौथे टेरेस पे जाके आप पूरी बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। वहाँ आपको क्या मिलेगा? एक खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन मिलेगा जो जिसमें क्या है? खूबसूरत फूलों से वो घिरा हुआ है। ओके, एंड इट हैड बी प्लांटेड एंड वेल ग्रूम्ड, और बहुत खूबसूरती से अरेंज किए गए हैं ये फूल उसके इर्द गिर्द। प्रिंस दाराज वाइफ वाज नादिरा बेगम। प्रिंस दारा की बीवी का नाम क्या था? नादिरा बेगम, लेकिन उनको और भी नाम से जाना जाता था। उसका था आल्सो कॉल्ड परी बेगम। इट वाज सेड दैट द गार्डन वाज नेम्ड आफ्टर द वाइफ, हिज वाइफ परी। Prince Dara was later murdered by his younger brother Aurangzeb. In 1659, Aurangzeb wanted to take the control of the empire. Prince Dara left behind the Pari Mahal, which has become a tourist spot in Kashmir. So, परी महल को किस लिए परी महल का नाम आया? क्योंकि उनकी बीवी का नाम क्या था? नादिरा बेगम, और उसकी वजह से उनके बाद, उनकी डेथ के बाद, उसकी बीवी की डेथ के बाद उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम परी महल रखा गया। ओके, एंड प्रिंस दारा वाज लेटर मर्डर्ड बाय हिज यंगर ब्रदर औरंगजेब। ओके, और क्यों उन्होंने उसका कत्ल किया? औरंगजेब ने क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो चाहता था कि औरंगजेब वांटेड टू टेक द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, कि उस पूरी सल्तनत का कंट्रोल उसे चाहिए था, इसलिए। ओके, और अब परी महल क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर में जहाँ हर कोई जा सकता है, विजिट कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट दैट? दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर. So tomorrow we will start our first lecture of this unit inshallah. So be ready for this. Take care of yourself. Thank you so much. Allah.